Hello my dear children, welcome to Science and Technology, a book by Galaxy Publication for class 6. Children, let's begin with chapter number 1, that is Life Around Us. See the overview. Sarita and Subodh went on vacation to many places of interest. One such trip took them to the river Ganga in Rishikesh. They climbed the mountains of Himalayas where it was very cold. तो ये कैसी जगह गए? ये बहुत ही ऐसे रीजन में गए जहां पर बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट था. They saw many kinds of trees on the mountains, oak, pines and deodar, very different from the one near their homes or on the plains. तो वहां पे उन्होंने जो trees देखे, they were very different from the one which are found near their house. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels to the hot desert. They collected different kinds of cactus plant from this trip. Finally, they went to a trip to Puri and visited the sea beaches dotted with casuarina trees. While recollecting all the fun that they had on these trips, a thought struck them. All these places were so different from one another. तो आपने क्या देखा कि places जो है, चाहे आप राजस्थान को देख लो और you take the Himalayas, दोनों ही places में बहुत ज़्यादा difference था. और वहाँ पे जो लाइफ थी, वहाँ जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, दे वर ऑल्सो डिफरेंट. All these places were so different from one another. Some were cold, some were very hot and dry, and some places were humid. And yet all of them had many organisms of various kinds. So the introduction of this chapter is, there are millions of things around us. Some of them are living, animals, insects, birds, cow, cat, dog, and plants like grass, algae, trees, shrubs are living. Objects like bottle, utensil, soil, air, water, furniture, bricks, pens, pencil, etc. are non-living. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हम जब हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग हैं. दैट मीन्स उनके अंदर जान नहीं है. जैसे कि पेंसिल है, यूटेंसिल्स है, चेयर है, टेबल है, उनमें जान नहीं है. सो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. All these characteristics are observed in the living but not in non-living things. You have already studied the need for classification of different things. Similarly, it is necessary to divide living things into different groups because there is a large variety of living things and it is not possible to study all of them. इसीलिए बच्चों हमने इनकी ग्रुपिंग कर रखी है ताकि हम एक ग्रुप को अगर स्टडी करते हैं तो उसके अंदर आने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमें पता चल जाते हैं. Therefore, to study the living things is an easier and systematic way. We have to classify them on the basis of common features. In spite of the fact that there are certain characteristics which are found in living things and not in non-living things, there are some common features between these two groups. Let's begin. Write any 5 living beings or organisms and 5 non-living things from your surrounding. तो यहाँ पर आप living things के बारे में लिखेंगे और यहाँ पे non-living things के names को आप note down करेंगे. What is common between living and non-living things? तो बच्चों living और non-living things के बीच में भी कोई बातें ऐसी हैं जो common है. Like both have mass, दोनों के अंदर मास होता है, and they occupy space, यानी कि ये क्या है, they belong to the category of matter हैं, उनके अंदर weight भी है और वो एक जगह को भी ऑक्यूपाई करते हैं. अगर आप एक चेयर की बात करो तो चेयर भी एक स्पेसिफिक एरिया को ऑक्यूपाई करती है. तो एक तो ये सिमिलैरिटी हो गई that they have mass, they occupy space, और तीसरी चीज they have a size of their own. आइए देखते हैं क्या है. What is common between living and non-living things? Just think about a cow, plant, rose, a neem tree, pen or a pencil which you use every day in the class. All these things have mass, shape and volume. All are made up of fundamental structural units. तो अगर हम living things की बात करें तो उनका fundamental और structural unit जिनसे वो बने हैं वो हैं cells. तो cells जो है ये सबसे छोटी चीज है जिससे वो बने हैं. It is the structural and functional unit of living things. और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो बच्चों उनके अंदर सबसे छोटी चीज जो प्रेजेंट है वो है मॉलिक्यूल. तो स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर द non-living things is a molecule. A newborn baby has more than 2000 million cells. These cells cannot be seen.
जैसे आप मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते, ऐसे ही सेल्स को भी हम नहीं देख सकते। They are too small to be seen with naked eyes. Cells in different living things differ in their shape as well as in size. Activity 1, observation skill. To differentiate between living and non-living things, identify the things given as living or non-living by studying the example. Now, bird. See the letter box. Letter box क्या movement show करता है? नहीं. So you will have a cross here. Sensitivity है उसमें? नहीं है. So again a cross. वो respire भी नहीं करता है, excrete भी नहीं करता है. So it is a non-living thing. It's not a living thing. और वहीं अगर हम monkey की बात करें तो monkey movement भी show करता है, sensitive भी है, respire भी करता है, excrete भी करता है. So it is a living thing and not a non-living thing. ऐसे ही बाकी के पार्ट्स आप अपने आप से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। Let us consider an animal like elephant, a plant like rose and a non-living things like chalk, which your teacher uses every day in the class. All these things possess mass, तो इनके पास mass भी है, shape भी है, and they occupy the space. They are made up of basic structural unit. In case of elephant and rose, the structural unit क्या है? Cell है। और वहीं अगर हम chalk की बात करें तो उसके अंदर सबसे छोटी इकाई क्या है? That is the molecule. Cells do not exist in non-living things. तो non-living things के अंदर cells exist नहीं करते हैं, तभी तो वो non-living है। Now have an activity 2. To study plant cell by observing the cells of onion peel under a microscope. तो आप क्या करेंगे? आप एक अनियन लेंगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। Then you take one of its strip और उसके अंदर के भाग में से आप उसके अंदर से बहुत थिन फिल्म प्रेजेंट होती है बच्चों, आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे and you will see it under the microscope. तो आपको वहां पर दिखाई देंगे कि अनियन के सेल्स। You will notice small chamber-like structures which are called the cells. Now difference between living and non-living things. बहुत सारे differences हैं बच्चों, like living things, the structural and functional unit is cell, और वहीं non-living things की बात करें तो उनके अंदर present होते हैं molecules. Living things can respire, can excrete, can show locomotion, लेकिन non-living things अपने आप से they do not respire. They do not excrete. They show movement only when somebody lifts them or moves them. Living things are made up of cells that have living matter called as cytoplasm. और वहीं non-living things किससे बने होते हैं? Molecule में, and it does not have any living matter. They have definite shape, size and structure. और non-living things का कोई definite shape, size या structure नहीं होता है। They can grow or increase in size or weight due to cell division. तो क्या है कि living things जो हैं वो बढ़ते हैं, they grow because of the cell division, लेकिन non-living things they cannot grow. They increase in size sometimes due to addition of external layer on the outer surface. Living things को food चाहिए in order to obtain energy, वहीं non-living things को कोई food की जरूरत नहीं होती because they do not require energy. Living things breathe and respire to obtain energy from food, और वहीं non-living things do not breathe. They excrete water and other waste materials that are harmful for the body, लेकिन non-living things excrete नहीं करते हैं. Living things reproduce and increase in number. They raise their number in order to maintain their species, और वहीं non-living things जो हैं they do not give birth to young ones. Living organisms have a definite lifespan, लेकिन non-living things का कोई lifespan नहीं होता है. Living things are able to move their body parts or body as a whole. That means living organisms जो हैं वो locomotion show करते हैं, लेकिन non-living things जो हैं ये कोई motion show नहीं करते unless any external forces applied on them. They adapt themselves to the habitat. They do not need adaptation to the habitat. Characteristics of living things. We normally recognize the living things by its activities such as walking, eating, excreting, breathing, etc. But a robot can also walk and a car can run. Will you call a robot or a car a living thing? नहीं, we will not call it. लेकिन अगर हम plants की बात करें, हम animals की बात करें तो they are living organisms. Living things are made up of cells. Cells के अंदर बच्चों
साइटोप्लाज्म होता है विच इज द लिविंग मैटर, इसी वजह से सेल्स जो है वो जिंदा होते हैं, दे बिलोंग टू द लिविंग वर्ल्ड। Living things are made up of cells and have a definite life cycle. Your school building is made up of bricks arranged in layer. A brick is the smallest unit of the construction. जैसे आप एक दीवार बनाते हो ना, और दीवार बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। तो जैसे एक ब्रिक है उससे दीवार बन रही है, तो दैट ब्रिक इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ दैट वॉल। Similarly, living organisms are made up of tiny units जिनको हम बोलते हैं cells and have a definite lifespan. Some animals and plants consist of only one cells, और ऐसे animals या plants को हम बोलते हैं unicellular organisms like amoeba, like euglena and paramecium. And many other animals are also made up of only one cell. There is no change in the number of cells throughout their life cycle. और वहीं अगर हम बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट हैज नंबर ऑफ सेल्स इन इट्स बॉडी, सो इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Humans are also multicellular organism because their body is made up of millions and trillions of cells. Characteristics: the quality or features of a living being or thing that makes them recognizable. Now have a look on InfoByte children. Giant redwood tree in South America keeps on growing till they live. Since they live for 300 to 400 years, they are the tallest trees on earth. Living things grow. Now you all know that the life begins with a single cell. यही single cell जो है ये further divide करता है by the process called as cell division. और एक सेल से दो, दो से चार, चार से 16 cells जो हैं ये बनते जाते हैं। And this helps in the growth of an organism. आपने देखा है जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो ही इज वेरी स्मॉल, और धीरे धीरे विद द स्पैन ऑफ टाइम वो ग्रो होने लगता है एंड वन डे ही बिकम्स एन एडल्ट। ऐसे ही बच्चों प्लांट्स में भी ग्रोथ देखने को मिलती है। इफ लाइक यू हैव अ प्लांट, अगर हमने कोई प्लांट लगाना है, हम क्या लेकर आते हैं, पहले सीड्स लेकर आते हैं, हम सीड्स को सो करते हैं, धीरे धीरे सीड्स जर्मिनेट करती हैं और जर्मिनेशन के बाद दे टेक द फॉर्म ऑफ अ प्लांट। Life begins from a single cell. This one cell undergoes division to form number of new cells which result in the growth of the individual. Growth can be seen in germinating seed within a day or two. Just look at the picture. When you were a small baby, पहले आप baby थे, फिर आप थोड़े से बड़े हुए, then you started walking, then you become a teenager and then you developed into a fully grown adult. Just look at the picture. When you were a small boy, you can see how you have grown. In humans, life begins from a single cell which develops into a baby. The baby grows into a child develops into an adult and finally grows old. Birds and fish lay eggs from which young ones hatch. Later on, these young ones grow into adult and are able to reproduce by themselves. InfoByte: the longest finger will grow the fastest nail in the body. Activity 3: to study cheek cells from the mouth scraping. Open your mouth and lightly scrape the inner lining of your cheek with a finger or a toothpick. Place the scraping on a glass slide. Put a drop of iodine and cover it with a cover slip. Observe it under a microscope. Draw the structure of cheek cells. They are like animal cells. तो आप ऐसे करके उसकी एक स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं and you can see it under a microscope. Living things have a definite lifespan. Now children, हमें पता है जो चीज़ जन्म लेती है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। That means जो भी living organisms हैं they have a definite lifespan. हमें पता है हमारी लाइफ किससे स्टार्ट हुई है, सिंगल सेल से। यही सिंगल सेल डिवाइड करके क्या बनाता है, बेबी बनाता है। बेबी के बाद वी डेवलप इनटू अ फुली ग्रोन चाइल्ड, देन इट डेवलप्स इनटू एन एडल्ट। एडल्ट होने के बाद वी ग्रो इनटू एन ओल्ड पर्सन, और ओल्ड पर्सन की एक टाइम के बाद डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स क्या है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. This is not only true for humans but also for animals as well as plants. Living beings follow a life cycle. They are born, grown into adult, get old and finally die. Each individual organism has definite lifespan during which it performs its life activities. This duration of time for which a living organism lives is called its lifespan. Some organisms live for a few days while others
for many years. All living beings start their life from a single cell. In unicellular organisms, the number of cell remains the same throughout the year. उनकी पूरी लाइफ तक उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है जो कि उनकी बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो लोकोमोशन हो, सर्कुलेशन हो, एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल. इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? अमीबा एंड यूग्लिना. बट इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हमारी बॉडी के अंदर जहां बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस. मतलब हमारे पास ब्रीदिंग के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, लाइक ह्यूमंस, मंकी, डोंकी एक्सेट्रा. Have a look on InfoBytes. Virus, a microorganism, is considered a link between living and non-living world. Some scientists believe it to be living, while some others consider it as non-living. Living things reproduce. Now, as the living organisms mature, they are capable of giving birth to their young ones in order to maintain their species. अपनी रेस को maintain करने के लिए they give birth to their children, which resemble the parents. All living organisms reproduce. All animals such as human beings, dog, cat, cow give birth to new animals like themselves. We all know कि जो birds हैं, birds क्या lay करती हैं? They lay eggs. Like hen, parrots, they all lay eggs, जिसमें से उनके young ones जो हैं वो hatch out होते हैं. Baby birds come out from the eggs after a few days. Frogs, snakes, spiders, mosquitoes also hatch from eggs. Most plants also produce from seeds. Can you imagine what would happen if living things could not reproduce? There would be no living organism on the earth. क्योंकि हमें पता है कि organisms का एक लाइफ स्पैन जो है वो डेफिनेट होता है, और अगर उनके बेबीज नहीं होते हैं तो आफ्टर देम there is no one to maintain their race. इसलिए life from earth will be completely exhausted, खत्म हो जाएगी अगर वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं तो. Living things respond to stimuli. Reacting to the change in the surrounding is called as a response. भाई अगर आपको मम्मी ने गर्मा गर्म दूध ला कर दिया और आपकी टेबल पे रख दिया तो आप उसको टच करते हो, आपको तो बहुत गर्म है, आप हाथ एकदम से हटा लेते हो. Now this is what? This is the response to the stimuli. A change around us that make us respond, it is known as stimulus. Living things respond to external stimuli or change in their surrounding. For example, जब हम bright light में जाते हैं बच्चों, तो आपका क्या होता है? आप अपनी आईज को बंद कर लेते हो या अपने प्यूपल का साइज डिक्रीज कर लेते हो. ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि इससे ज्यादा अमाउंट में लाइट जो है वो हमारी आंख में एंटर ना कर जाए और हमारी आंख को डैमेज ना कर दे. और वहीं अगर हम एक डार्क रूम में जाते हैं तो हम अपनी आईज पूरी अच्छे से वाइडली ओपन करते हैं सो दैट लाइट कुड एंटर इनटू आवर आईज. सो दिस इज आल्सो अ रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस. In hot seasons, our body start perspiring so that our body temperature does not rise with the rise in the temperature of the atmosphere. In winters, we see that our skin wrinkles to avoid loss of heat from the body. If our hand touches a hot object or thorn picks on foot, we respond quickly by withdrawing our hand or removing the thorn from the foot. Worms move away from the saline solution and salt. Cockroaches come out in the dark and move away in the light. तो ये भी अब एक response show करते हैं. Plants move towards the light when kept in dark room. और जब plants movement show करते हैं light की तरफ, इसे हम बोलते हैं phototropism. Just like sunflower turns towards the sunlight, तो it shows phototropism. वहीं अगर हम रूट्स की बात करें तो बच्चों रूट्स क्या हैं? रूट्स ग्रो टुवर्ड्स द अर्थ. रूट अंदर की तरफ ग्रो करती हैं, सॉइल में अंदर की तरफ मूव करती हैं, इसीलिए वो शो करती हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. लिविंग थिंग्स नीड फूड. नाउ यू ऑल नो, क्योंकि हम लिविंग हैं, वी रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट अ डे टू डे एक्टिविटी. ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द फूड वी ईट. अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा. ऑक्सीडेशन अगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू गेट द एनर्जी, और अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. हाउ डू यू फील व्हेन यू डू नॉट गेट फूड ऑन टाइम? ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू डू वर्क.
Most plants make their own food in their green leaves. They are called as autotrophs. क्योंकि plants अपना खाना खुद बनाते हैं इसीलिए उन्हें हम autotroph कहते हैं. Plants अपना खाना किस process से बनाते हैं? By the process which is called as photosynthesis. Photosynthesis is a process in which plants manufacture their own food using raw materials like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. They do not move about like animals to get their food. Many wild animals get their food by killing other animals. Others eat only plants. Animals are heterotrophs. इसीलिए कहा जाता है कि plants तो autotroph हैं लेकिन animals belong to the category of heterotrophs. ऐसा क्यों? Because they cannot manufacture their own food. They depend on plant as well as other animals for their food. Living things excrete. Now accumulation of waste material is harmful for the body. So this waste material has to be removed from the body and this process is called as excretion. Waste materials are excreted mainly in the form of, किस फॉर्म में निकलते हैं हमारी बॉडी से बाहर? In the form of solid waste material जिसको हम बोलते हैं fishes और in the form of urine. Sweat जो आपकी बॉडी से निकलता है बच्चों in the summer season is again a type of waste material. कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल आउट करते हैं दैट इज ऑल्सो अ वेस्ट मटीरियल जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, पैरामेशियम, बैक्टीरिया रिमूव वेस्ट थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉडी. ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में तो सिर्फ एक ही सेल है और वही सेल उनके बॉडी के सारे ही फंक्शंस को परफॉर्म करता है. Plants expel carbon dioxide and water vapors through small pores in their leaves called as stomata. तो leaves में lower surface पे present होते हैं tiny spores या pores, small hole like structures जिनको हम बोलते हैं stomata और stomata के थ्रू ही gaseous exchange होता है. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर करती है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट प्लांट के से बाहर फेंकी जाती है. They also store waste in special cells. Some of these waste are useful to us. For example, gum, latex. ये क्या है? ये plant के waste material है, but they are very useful for the humans. Gum is a waste given out by the stem of acacia plant. Rubber is also given out by rubber tree. Now have a look at infobites. The largest organ of excretion in humans is skin. Now have a look on horse children. What happens to a clock? What happens to a clock when its cells are finished? तो वो रुक जाती है, हमें नया सेल रिप्लेस करना पड़ता है. Can clouds move across the sky if the wind is not blowing? तो नहीं, clouds नहीं मूव करेंगे जब तक कि wind blow नहीं करेगा. Infobites, earthworms breathe through their skin. लिविंग थिंग्स मूव. नाउ लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट. अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम कहेंगे कि प्लांट्स तो सॉइल में फिक्स्ड हैं, वो तो मूवमेंट नहीं शो करते, बट दे शो मूवमेंट. प्लांट के पार्ट्स जो हैं दे शो मूवमेंट. लाइक सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड सनलाइट एंड शोज फोटोट्रॉपिज्म. वहीं रूट्स जो हैं दे मूव अंडर द ग्राउंड एंड शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और स्टेम जो है वो ऊपर ग्राउंड की तरफ को मूव करती है एंड इट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म. और अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे शो लोकोमोशन इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज. लिविंग थिंग्स show movement. These movements may be from one place to another or movement of part of the body. Internal movement like transport of water, minerals and foods also takes place inside the plant. We see movement in non-living things as well. But non-living things cannot move on their own. वो अपने आप से move नहीं कर सकते unless and until an external force is applied on them. Living things respire. Now you all know that we all respire. Living things को respiration करना बहुत ज़रूरी है. They take in oxygen and give out carbon dioxide. ये ऑक्सीजन जो हम अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, it is required for the oxidation of food we eat. और अगर फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी विल नॉट बी रिलीज्ड. एनर्जी नहीं मिलेगी तो वी विल नॉट बी एबल टू डू ऑल द टास्क. इसीलिए ऑक्सीडेशन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड फॉर दैट ओनली वी रेस्पायर. टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन ब्रीथ आउट. You have just taken in oxygen and given out carbon dioxide. Close your nose and mouth for a while. How do you feel? तो हम suffocated feel करने लगते हैं. It is because the air we were breathing was a must for you.
The air you are breathing was in oxygen. The oxygen combines with food that you digest and produce energy. Why do we need energy? We need energy to stay alive. हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है. The movement of our arms and legs, blinking of our eyes and beating of your heart uses energy. छोटे से छोटा काम करने के लिए भी बच्चों हमें एनर्जी की ज़रूरत है. अगर हम किसी से बातें भी कर रहे हैं, we require energy. If we are blinking our eyes, we require energy. You use energy when you read a book, when you think or when you eat. All land animals breathe in oxygen from the air. Fish breathe the oxygen dissolved in water. Experimental investigation to prove that carbon dioxide is given out during respiration. तो हम क्या करेंगे, हम एक कंटेनर लेंगे और उसमें हम लेंगे लाइम वाटर. Breathe out air through a straw into the glass. और जिस ग्लास में आपने लाइम वाटर लिया है उसमें आप breathe out करेंगे with the help of a straw. तो हम क्या देखते हैं कि जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है. And this is a sure test for carbon dioxide, that carbon dioxide turns lime water मिल्की. तो इससे हमें पता चल जाता है कि द एयर विच वी आर ब्रीदिंग आउट इज कार्बन डाइऑक्साइड. स्पीशीज. यू कम अक्रॉस वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन योर सराउंडिंग. आर दे ऑल अलाइक? नहीं, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे नहीं हैं. हॉर्सेस जो हैं उन ह्यूमन से डिफरेंट है. मंकीज जो हैं वो भी ह्यूमन से डिफरेंट है. तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दिस वर्ल्ड. A dog differs from cat differs from pig, and a pig from a goat. Each kind of organism has many individuals which are similar to each other. वहीं अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग्स के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर एंड हेंस दे मेक अप टुगेदर अ स्पीशीज. These individuals may differ slightly, but their form, habit and behavior are almost same. Such a group of similar living organism is called as species. जैसे जितने भी human beings हैं वो सारे के सारे एक जैसे हैं, but they differ slightly in their characteristics. इसीलिए उनको हमने किस species में रखा है? Human beings की species में. The members of the species have similar body parts. उन सबके parts, body parts जो होते हैं वो similar होते हैं. Live in the same habitat. वो एक जैसे habitat में होते हैं. They eat same type of food and reproduce among themselves. And सबसे बड़ी important चीज़ है कि the individuals of a species can reproduce among themselves. A horse will always produce a horse. ऐसा नहीं होगा कि horse will produce a cat or a dog. Horse जो है it will reproduce or give birth to a horse only. It cannot produce an elephant. A rose plant will always produce seeds from which only rose plant can grow. ये नहीं होगा कि rose plant से हम sunflower का plant बना सकें. There are about 1600,000 species of animals and 400,000 species of plants in the world. Are all living things similar? Like the inanimate world, living world is also full of diversity and variety. Each organism possesses definite shape, size, structure and color pattern. What is the reason of this variation? They vary because they live in different kind of habitat. अगर हम अफ्रीका चले जाएं तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो लोगों का स्किन कलर है वो डार्क है. वहीं अगर हम अमेरिका चले जाएं तो वहाँ हम क्या देखेंगे कि वहाँ के लोगों का स्किन कलर कैसा है? वाइट है. इन इंडिया वी हैव द स्किन कलर विच इज मोस्टली व्हीटिश. तो ऐसा क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द हैबिटेट. हम किस एनवायरमेंट में रह रहे हैं. लाइक इन अमेरिका यू हैव अ वेरी कोल्ड क्लाइमेट, so there will be less production of melanin. And similarly अगर हम अफ्रीका में जाएं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? It is very hot, so more amount of melanin secretes out in the body. Some organisms feed only on plants, several feed on both plants and animals, while a few eat only animals. तो जो सिर्फ plants खाते हैं उनको हम बोलते हैं herbivores, जो सिर्फ flesh खाते हैं उनको हम बोलते हैं carnivores, और जो plants और animals दोनों को ही खा सकते हैं उनको हम बोलते हैं omnivores like humans. Similarly, there is diversity in habitat of different organisms. Let us read about this in brief now. Habitat of living organisms. All living organisms need place to live where they can get plenty of food, shelter and protection from adverse climatic conditions as well as from their enemies.
The place of their living is called the habitat. Living organisms lives in variety of habitat. For example, a pond is a habitat and so is a forest and a sea. Even seashore, air, soil are the habitat for various organisms. Each individual requires a particular habitat and environment to live better and survive longer. Many plants such as lotus, water chestnuts grow better in water. तो ऐसे बहुत सारे plants हैं जो सिर्फ water में ही grow करेंगे और कुछ ऐसे plants हैं जो ऐसी जगह grow करेंगे जहाँ पे scarcity of water हो, जैसे कि cactus. वहीं अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं cactus को pond में grow करने की कोशिश करूँ तो I will not be able to be successful. And similarly अगर मैं water chestnut को या lotus को desert area में जाके कोशिश करूँ कि they grow up, they will not be able to grow because they have a proper habitat, they have a particular habitat to grow. These different plants prefer different types of soil to grow and become healthy. A variety of animals surrounding us also live in different kinds of habitat. You must have seen birds flying in the sky, monkey जो हैं वो पेड़ पे रहते हैं और बहुत सारे wild animals ऐसे हैं जो कि forest में रहते हैं, तो ये उनका habitat होता है. Similarly, you can find frog, fish, whale, etc. in water. Every day we come across dog, cats, cow, buffaloes which live on land. Have you ever seen the habitat of ant and earthworm? They live in soil. We will study more about the habitat of living organism in detail in the next chapter. Know about more. The ancient Greek philosopher Aristotle is called as the father of biology. Biggest land animal is the elephant. Largest animal in the world is blue whale. Euglena is a unicellular organism having characteristics of both plant and animals. It has chlorophyll but lacks cell wall. Waste in special cells. Some of these waste are useful to us. For example, gum, latex, etc. Gum is a waste given out by the stem of acacia plant. Rubber is also given out by rubber plant. Now have a look on InfoBite. Flower of few plants like queen of night blooms only at night. These cannot bear high temperature and light of the daytime. These are white in color as this color is easily visible in darkness of the night and effectively in attracting the insects for pollination. Have a look on keywords children. Reproduction, a process in which living beings produce young ones of their own kind. Stimulus, something that leads to a reaction in living things. Molecule, structural unit of non-living things. Excretion, removal of waste or unwanted material from the body of organism. Habitat, habitat वो place होती है जहाँ पर living organisms रहते हैं. Phototropism, response of living organisms towards light. Summing up, the common feature in living and non-living thing is that they have mass and volume. To systemize the study of living things, they have been grouped on the basis of similarities and dissimilarities. Plants continue to grow throughout their life, but animals do not grow after a particular time. Animal lives everywhere on the earth in every kind of terrain and every kind of climate. Now have a look on exercise children. Darken the correct circle in the OMR sheet. तो यहाँ पर आपको एक OMR sheet दी जाएगी and you are going to fill the circles with a black or a blue ball pen. Now see the first question. Plants require sunlight. Plants को क्यों चाहिए होती है sunlight? Yes, it is for the production of food. So you will darken the D circle. What are the characteristics of living being? They reproduce, they grow, they need food, all of these. So you will circle again the D block. The wood of which a wooden chair is made. तो wood कैसी होती है बच्चों? Wood was once living and now is dead. So इसमें आप C वाले circle को fill करेंगे. An example of unicellular organism is amoeba. So you will circle the C1. Which among of the following is not a product of excretion? So it is energy. Again you will circle the C1. Now see the fill in the blanks. A newborn baby has more than 2000 million cells. Animals like dash and dash can be found in water. Animals like fishes.
crabs can be found in water. All bacteria and yeast are unicellular. Cells do not exist in non-living things. A change in our surrounding that we respond to is called the stimulus. Stimuli. Tick the correct and cross out the incorrect statement. All living things grow slowly to become mature. Yes, this is true. Plants inhale air through stomata. Yes, again this is correct. All plants respond to different kind of stimuli. नहीं, सारे plants जो हैं वो stimulus को respond नहीं करते हैं. So this is cross. Growth, if present in non-living things, is internal and irreversible. Again this is false. All living things do not reproduce. नहीं, सारे ही living organisms जो हैं वो reproduction show करते हैं. Plants expel carbon dioxide and water vapor through stomata. No, they take in. So this is a wrong statement. I hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.